सो हेलो हे हाय। तो अभी हम लोग डिफेक्ट्स एंड देयर पॉसिबल कॉजेज़ जो कि डार्क रूम सीरीज चल रही है उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सो ए गुड क्वालिटी रेडियोग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। एक अच्छी क्वालिटी का रेडियोग्राफ किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस। वेन एवर द क्वालिटी ऑफ radiograph is not satisfactory, it is important to discover the cause for preventing this mistake in future. And the cause is always need not to be from the dark room, it can be from elsewhere also. The following summary gives the defects and possible causes. So general defects and causes क्या क्या होते हैं? Inadequate general blackening। इनएडिक्वेट मतलब कि ब्लैकनिंग जो कि होती है वो कम है, तो वो किस वजह से हो सकती है? कॉजेज़ क्या इसके? अंडर एक्सपोजर या फिर डेवलपिंग टाइम टू शॉर्ट हो सकता है। इनसफिशिएंटली रिप्लेस्ड डेवलपिंग टाइम नॉट एडजस्टेड टू द टेम्परेचर ऑफ द पाथ है, या फिर बैड कंपोजिशन ऑफ द डेवलपर। सो एक्सेसिव जनरल ब्लैकनिंग अगर हो गई तो फिर क्या क्या कारण है इसके? ओवर एक्सपोजर, ओवर लॉन्ग डेवलपिंग टाइम नॉट एडजस्टेड टू द टेम्परेचर एंड ऑफ पाथ एंड बैड कंपोजिशन ऑफ द डेवलपर। एंड एक्सेसिव कंट्रास्ट अगर आ रहा है तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं? ओवर सॉफ्ट रेज या फिर टू लो केवी व्हेन, बिकॉज कंट्रास्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द केवी के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? केवी के। सो डेवलपिंग टाइम टू लॉन्ग एंड बैड कंपोजिशन ऑफ द डेवलपर बाथ। तो ठीक है। इनएडिक्वेट अगर कंट्रास्ट आ रहा है तो फिर क्या होगा? कॉजेस इसके हो सकते हैं ओवर हार्स, मतलब हार्स रेज यानी कि टू हाई केवी व्हेन टेकिंग रेडियोग्राफ एक्सपोजर compensated for by shorter developing time, too short developing time for the temperature of the bath, temperature of the bath, exhausted developer, bath unsuitable or wrongly prepared developer. So insufficient sharpness। so insufficient sharpness के क्या causes होते हैं? सो इनसफिशिएंट शार्पनेस के कॉजेस होते हैं टू शॉर्ट फोकस फिल्म डिस्टेंस, वाइब्रेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब और मूवमेंट बाय पेशेंट ड्यूरिंग द taking of the radiograph, over large and damaged focus, patients not sufficiently pressed against cassette or film, bad contact between film and screen, insufficient sharpness owing to the coarse grain of the intensifying screens influencing the secondary rays। ओके, तो इंसफिशिएंट शार्पनेस के क्या कारण हो सकते हैं? टू शॉर्ट फोकस फिल्म डिस्टेंस बहुत कम रखी हो, या फिर वाइब्रेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब एंड मूवमेंट बाय पेशेंट ड्यूरिंग द टेकिंग ऑफ द रेडियोग्राफ, ओवर लार्ज या डैमेज्ड फोकस, पेशेंट नॉट सफिशिएंटली प्रेस्ड अगेंस्ट कैसेट और फिल्म, बैड कंटेक्ट बिटवीन द फिल्म स्क्रीन एंड इनसफिशिएंट शार्पनेस जो होती है, या फिर और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द सेकेंडरी रेज। सो ग्रे फॉग अगर आ रहा है तो वो उसका क्या रीजन हो सकता है? सो ग्रे फॉग इज इन द डार्क रूम, lighting not in the order, film exposed to dark room light for too long or held too close to the lamp, influence of undesirable x-rays and white light, film too old or stored in bad condition, या फिर salts in the developer, या फिर coming from unsuitable joints in the tanks or frames, the loaded cassette exposed too long to excessive heat, film examined too quickly in white light during the fixing, inadequate closing of the cassette, bad composition of the developer। एंड येलो फॉग क्या होता है? येलो फॉग जो होता है ये किस वजह से होता है? प्रोलॉन्ग डेवलपिंग टाइम इन द ऑक्सीडाइज्ड डेवलपर में जब ज़्यादा देर तक डेवलप करते रहते हैं, एंड सोल्यूशन टर्न वेरी ब्राउन। सो एग्जॉस्टेड बात या इनएडिक्वेट फिक्सिंग की वजह से होता है। एंड केमिकल या फिर डाई
कोरियोक फॉग यानी कि येलोइश ग्रीन बाय रिफ्लेक्टेड बाय light and pink transmitted light. So developer contaminated by fixing bath, inadequate rinsing, development and exhausted fixing bath, prolonged developing time in the exhausted bath, film exposed to white light during the fixing, and while exhausted fixing bath is used. तो डेवलपर जो होता है कंटामिनेटेड होता है बाई फिक्सिंग बाथ, इनएडिक्वेट रिंजिंग आफ्टर डेवलपमेंट एंड एग्जॉस्टेड fixing bath, prolonged developing time in the exhausted bath, film exposed to white light during the fixing while exhausted fixing bath is used. And streaky grey fog. So streaky grey fog क्या है? Film too old or incorrectly stored की वजह से स्ट्रिकी ग्रे फॉग आता है। एंड वाइट प्रेसिपिटेशन किसी वजह से आता है। इनएडिक्वेट इंटरमीडिएट रिंजिंग व्हेन यूजिंग द हार्डनिंग फिक्सिंग बाथ। एंड लाइट स्पॉट्स किस वजह से आते हैं? एयर बबल्स, वेरी स्मॉल साफली डेलिनेटेड स्पॉट फिल्म्स स्पॉट्स होते हैं। एयर बबल्स होते हैं वेरी शार्पली डेलिनेटेड स्पॉट्स and film insufficiently agitated during the first 30 seconds in the developer, and drops of fixing or stop bath fell on the film before it was placed in the developer, an impression of sharp objects on the film, and packing of the container. So if this happens before the exposure, then the spots are brighter than their surrounding, and dry spots over rapid or irregular drying causing drops by the collection of water and film stuck together or to the wall of the tank during the development, या फिर greasy spots on the film prevents developer from penetrating the emulsion, defective intensifying screen, impurities between intensifying screen and film, and small pitted spots in the most cases of the dark edges, influence of bacteria, या फिर too slow drying in the hot damp climate, या फिर especially if the washing water is not very pure, light lines or streaks, इनका क्या कारण होता है? राइटिंग ऑन द एनवलप बिफोर exposure, insufficient agitation during the development of process, irregular drying, या फिर drops of fixing and stop bath run over the emulsion before the development process, and light marks. So light marks क्या होते हैं? causes इसके होते हैं moon shaped cracking of the film caused by taking hold of with more two fingers prior to exposure. Fingerprints क्या होते हैं? Film touched before development by fingers which are too greasy and soiled with fixing bath and stop bath, some other acids. So light marks क्या होते हैं? मून शेप्ड के होते हैं, क्रैकिंग ऑफ द फिल्म की वजह से caused होते हैं by taking hold of it with the more than two fingers से जब पकड़ते हैं टू एक्सपोजर, एंड फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं फिल्म टच्ड बिफोर डेवलपमेंट बाय फिंगर्स विच आर टू ग्रीसी, या हैंड्स जो ग्रीसी ज़्यादा होते हैं, सॉइल्ड होते हैं विथ फिक्सिंग बाथ एंड स्टॉप बाथ, सम अदर एसिड, एंड डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं? तो जो डार्क स्पॉट्स के क्या कारण होते हैं? डार्क स्पॉट्स के कारण होते हैं drops of developer bath on the film prior to the developing, drops of the water on the film before development, static charge as a result of friction in fairly dry air, impression or sharp objects on the film after exposure, irregular drying, damp patches remaining on the film when it is removed from the drying cabinet, या फिर small pieces of metal stuck or टू द फिल्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस. तो डार्क स्पॉट्स के कारण होते हैं ड्रॉप्स ऑफ द डेवलपर बाथ ऑन द फिल्म, डेवलपर बाथ ऑन द फिल्म आ जाए डेवलपिंग के पहले ही, या फिर ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द
film before the development. Static charge as a result of fixing in a fairly dry air, impression of sharp objects on the film. After exposure, irregular drying, damp patches remaining to the film when it is removed from the drying cabinet, and small pieces of metal stuck of the film during the development process. So dark lines or streaks, scratches on the emulsion after exposure, impression, sharp objects after exposure of film, insufficient agitation during development, irregular drying, if drops of developer and water ran down film prior to the developing process. डार्क मार्क्स मून शेप्ड होते हैं. Bending of the film as a result of taking of it with more fingers after exposure. Fingerprints film taking hold prior to the development with fingers soiled with developer. Small bus shaped marks as a result of electrostatic charge. Yellow stain, prolonged development in old oxidized developer. एंड ओल्ड ऑक्सीडाइज डेवलपर में जब लंबे समय तक डेवलप करेंगे तो उससे येलो स्टेन्स आ सकते हैं. इनएडिक्वेट इंटरमीडिएट रेंजिंग, एग्जॉस्टेड फिक्सिंग बात एंड ब्राउन पैचेस किस वजह से आते हैं. improper fixing, diluted fixer, exhausted fixer, lack of agitation of fixer. एंड ब्लू ग्रीन स्टेन्स एग्जॉस्टेड फिक्सर या फिर हाई टेम्परेचर ऑफ फिक्सर की वजह से आते हैं. ब्राउन पैचेस किसकी वजह से आते हैं. इम्प्रॉपर फिक्सिंग, डाइल्यूटेड फिक्सर या फिर एग्जॉस्टेड फिक्सर, लैक ऑफ एजिटेशन ऑफ फिक्सर. ब्लू ग्रीन स्टेन्स किसकी वजह से आते हैं. एग्जॉस्टेड, जो फिक्सर एग्जॉस्ट हो चुका होता है, एंड हाई टेम्परेचर ऑफ फिक्सर हो सकता है. मेटालिक अपीयरेंस किस वजह से. डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द फिल्म. एंड मोटल एंड स्टिक्स के क्या कारण होते हैं. मोटल एंड स्टिक्स के कारण होते हैं लैक ऑफ एजिटेशन इन द डेवलपर एंड फिक्सर रिटेन्ड इन द हैंगर्स. एंड रेटिकुलेशन के क्या कारण होते हैं. एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन इन सक्सेसिव प्रोसेसिंग टैंक्स. एंड क्रिसेंट शेप्ड ब्लैक मार्किंग मार्क. तो कॉजेस क्या होते हैं. लोकल शार्प बैंड हैंडलिंग होते हैं. वाटर मार्क्स क्या होते हैं. कॉजेज इसके फिल्म लेफ्ट टू ड्राई इन हैंगर्स. वाटर मार्क्स के कॉजेस होते हैं. फिल्म लेफ्ट टू ड्राई इन हैंगर्स. ब्लैक सर्कुलर स्पॉट्स क्या होते हैं कॉजेस इसके. तो फिल्म लेफ्ट टू ड्राई बिफोर डेवलपमेंट. एंड वाइट सर्कुलर स्पॉट्स की वजह से आते हैं स्प्लैश ऑफ फिक्सर बिफोर द डेवलपमेंट. एंड ब्रांचिंग, रेडिएटिंग एंड ट्री लाइक मार्क्स किस वजह से आते हैं. तो बेंचिंग या रेडिएटिंग या ट्री लाइक मार्क्स आते हैं चार्जिंग फ्रिक्शन या प्रेशर बिटवीन फिल्म एंड इंटरलीफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वजह से. एंड क्लस्टर्ड वाइट स्पॉट्स किस वजह से आते हैं. डस्ट और फॉरेन सब्सटेंसेस ऑन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वजह से क्लस्टर्ड वाइट स्पॉट्स आते हैं. डिफेक्ट्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान कौन से डिफेक्ट्स होते हैं. लाइटर और डार्कर स्टिक्स इसके कॉजेस होते हैं. insufficient agitation during the development process. This defects occurs especially in the sectors which contrast sharply with the upper zones. It is caused by the fact of bromide increases locally the specific weight of the solution and runs down to the emulsion. सो लाइटर और डार्कर स्टिक्स जो होते हैं इंसफिशिएंट एजिटेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस के आते हैं. इसका डिफेक्ट अकर्स होता है स्पेशली इन द सेक्टर्स विच कंट्रास्ट शार्पली विद द अपर जोन्स में. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट ब्रोमाइड increases locally the specific weight of the solution and runs down the emulsion. एंड फॉग के क्या कॉजेस होते हैं. इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल लाइट इन द डार्क रूम ओवर लॉन्ग या फिर ओवर ए क्लोज एक्सपोजर टू द डार्क रूम लाइट एंड light, copper, tin, etc. source of the developer. In case of fog thickens, the film is often removed from the bath and if the air is warm. And yellowish dichoric fog जो होता है इसका कारण क्या होता है. bath in the
used too long over long developing time and excessive temperature of the bath and contamination of the developer bath by the fixing bath and defects during fixing के दौरान पे कौन से defects है ग्रे ब्राउन स्पॉट्स है और streaks inadequate fixing the failure is mostly due to action of light on unresolved silver halides and ब्लड इमेज के क्या कारण होते हैं दिस हैपन्स ओनली इनफ्रीक्वेंटली इन केस ऑफ निगेटिव्स येलो फॉग के क्या कारण होते हैं एग्जॉस्टिक अल्कलाइन और सिल्वरी फिक्सिंग बाथ एग्जॉस्टिंग अल्कलाइन और सिल्वरी फिक्सिंग बात की वजह से येलो फॉग आता है वाइट स्पॉट्स इन एडिक्वेट एजिटेशन दीज स्पॉट्स कैन बी रिमूव्ड बाय द मीन्स ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10%. वाइट स्पॉट्स किस वजह से आते हैं इनएडिक्वेट एजिटेशन की वजह से दीज वाइट स्पॉट्स को रिमूव किया जा सकता है बाय द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10% से डिफेक्ट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट रेंजिंग की वजह से जो आते हैं इफ द फिल्म्स आर insufficiently ranged too much developer passes into fixing bath and which means that fixing bath becomes alkaline too quickly increase the pH value and वाइट जो स्पॉट्स हो सकते हैं इफ ए डेवलपर विद ए स्ट्रॉन्ग alkaline is used to subsequently a hardening fixing bath with the aluminum salt and faults in automatic film processing and processing faults longitudinal scratches हो सकते हैं longitudinal this is connected with the guide plates in the tracks remove the processor lid and override the cut down the switch and pylines this is caused by chemicals partially drying out on rollers and this will repeated intervals equals to the diameter of the roller. This is caused by chemicals partially drying out on rollers and this will repeated intervals equals to the diameter of the roller. And white or black spots, this is caused by breakdown on the surface of a hard roller. Sometimes this will resemble calculi or phleboliths leads to wrong diagnosis. Each roller has to be checked and drying marks. This can be only in reflected light appear as dull longitudinal lines. These are caused by dirt and dust blocking part of the air knife. And non-drying marks क्या होते हैं it is due to the fault of fixer measure pH and silver levels in the fixer and check replenisher pumps. And general faults क्या क्या होते हैं high density marks black splashes they appear as splash on the film. The reason जो होता है is the film has been splashed with the developer water before development and splash area develops faster than surrounding area causing high density. And black marks जो होते हैं are in various shapes namely crescent shaped black fingerprints and former is caused by the bad film handling techniques. So technician gripping the film tightly between thumb and forefinger and later is caused by the technician who has developer water on his hands. And static marks, these marks look exactly the branches of a tree and causes are formica type bench and vinyl floor cover of the bench with oil based linoleum dry atmosphere in the dark room technician wearing nylon fabric या फिर loading and unloading of film into cassette screen needs to be cleaned regularly. Surface marks, these are single sided and appear in the surface of the film. इसके कारण क्या होते हैं algae in the wash tanks bits of emulsion and developer fixer in the wash tanks या फिर check the tank and clean it. And pressure marks, these can be white or black appear randomly over the film and cause क्या होते हैं incorrect film storage and poor film handling. Check handling and storage radiation and light fogging
randomly appear and cover larger areas. If the film is fogged through a material, their faint the material will be seen, and this is due to a fogging by radiation. And black marks around the edge of the film is due to light and leakage in the cassette of the film box is opened in daylight. And overall high density, this is caused by lead based paint, varnishes, formaldehyde, carbon monoxide, mercury not to be used, mercury thermometer, developer films and chemicals not to be stored in the same room, and heat maintain 20 degrees Celsius. Time of storage, check shelf life, incorrect shelf life, and check bulb wattage, filter or cracks in the filter, and background radiation. ओवरऑल हाई डेंसिटी किस वजह से होती है? लेड बेस्ड पेंट, वार्निशेस, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोक्साइड, मर्क्यूरी नॉट टू बी यूज, मर्क्यूरी थर्मामीटर नहीं यूज करना है डेवलपर में, एंड फिल्म्स एंड केमिकल्स नॉट टू बी स्टोर्ड इन द सेम रूम, हीट मेंटेन 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, टाइम ऑफ स्टोरेज, चेक सेल्फ लाइफ, इनकरेक्ट सेफ लाइट की वजह से, चेक बल्ब का वॉटेज चेक करना, फिल्टर फॉर क्रैक्स इन द फिल्टर, एंड बैकग्राउंड रेडिएशन चेक करना। ओवर ऑल हाई डेंसिटी के रीजन ये सब होते हैं। एंड low density marks due to fixture has been splashed on the film before development, and splash area is clearer before development and appear as white grease or oil in the surface of film through technician's hand. White marks, and this will be form of crescent shape due to the bad handling before exposure, and white fingerprints caused by the fixture, वाइट फिंगरप्रिंट जो कि कॉज्ड होते हैं बाय द फिक्सर और ऑयल इन द टेक्नीशियंस हैंड, प्रेशर मार्क्स, शार्पली डिफाइंड मार्क्स ड्यू टू आर्टिफैक्ट्स इनसाइड द कैसेट, आर्टिफैक्ट्स स्क्रीन रिड्यूस करते हैं लाइट को, आउटपुट को फ्रॉम द फिल्म, हेंस वाइट मार्क्स अपीयर होते हैं। डेवलपर फिक्सर वाटर कैन डैमेज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स एंड फिजिकल डैमेज टू स्क्रीन्स, स्क्रैचेस आल्सो कैन क्रिएट वाइट मार्क्स। सो हेयर इज़ द आवर नेक्स्ट चैप्टर, सेफ्टी एस्पेक्ट्स। सो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे।